Hi everyone, welcome back to Law Wednesdays with IMS Gets It Law। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशली फॉर ऑल यू बडिंग लॉयर्स जो कि ये सोचते हैं कि हम आगे जाके कोर्ट्स में प्रैक्टिस करेंगे, हम जाके अपीयरेंसेस देंगे एंड वील हैव टू आर्ग्यू इन फ्रंट ऑफ द जजेस। But in India and across the globe, there is something which is known as out of court settlement. So हम आज के सेशन में ये बात करेंगे कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या होता है और हम ये समझेंगे कि क्या डिफरेंट वेज हैं और ये कैसे हेल्प करता है हमारे इंडियन लीगल सिस्टम को। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज नथिंग बट द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड, which is a very famous, very common and very well practiced mode of resolving legal disputes. Now I'm sure आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अच्छा अगर हम कोर्ट नहीं जाते तो हमारे डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व होते हैं? इज देयर नो जज, इज देयर नो फॉर्म ऑफ एनी इंटरमीडियरी हु इज अवेलेबल? ऐसा कुछ भी नहीं है। What is important here to note is there is obviously a third party who is involved in this alternative dispute resolution method. This third party can be named with different synonyms such as the mediator, arbitrator, conciliator, so on and so forth. लेकिन the idea of alternative dispute resolution is कि हम कोर्ट से बाहर एक settlement करवाएं between the parties so that the parties also have the liberty to express their opinions, express what remedies they want out of the process and then come to an amicable solution. When we say amicable solution, which means that एक ऐसा agreement होना चाहिए out of the dispute which both the parties are happy with. The idea of all forms of alternative dispute resolution is that both the parties should be happy with the midway solution or the amicable solution which has been reached at during these processes. Now, when we specifically talk about alternative dispute resolution method, it involves different kinds of methods, but it focuses only and only on civil matters. तो जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं, फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को लेके आप एडीआर अप्लाई कर सकते हैं या एडीआर मैकेनिज्म्स यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर क्रिमिनल मैटर्स स्पेशली जो कि ऑफेंसेस हमारे इंडियन पीनल कोड एंड द प्रोसेस विच इज लेड डाउन अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वहाँ पे एडीआर एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट सिस्टम इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल फॉर सिविल, commercial, industrial and family law disputes, not for criminal law disputes. ये हमेशा याद रखिएगा। And the fact of the matter is, like I told, कि एक neutral third party का होना बहुत important है। जब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स की, ये हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि देयर इज़ अ utmost cooperation, there's utmost social order and an opportunity to reduce hostility. When we talk about ADR mechanisms, since it is a party-centric process, both the parties are always present during all the ADR forms of dispute resolution. Then at that time, both the parties have the opportunity to not just express what they're feeling, what they're thinking, what they want out of this process, but also have one-to-one communication, which is a very effective way of dispute resolution because of the fact that everything gets on the table. The another important thing that comes with ADR is the cost that is involved, especially if we talk about the various modes such as negotiation. Very limited cost is involved. आपको ये कोर्ट आने जाने का झंझट नहीं करना पड़ता, आपको लीगल फीस उतने एक्सटेंड पे देने नहीं पड़ते, आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एविडेंस कलेक्शन, रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन, इन सब के लिए कोई कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ता। दिस और एनी फॉर्म ऑफ एडीआर मैकेनिज्म कैन एक्चुअली टेक प्लेस एट एनी प्लेस दैट यू थिंक इज़ अप्रोप्रिएट और एज द पार्टीज जो वो सोचते हैं कि अच्छा ये हमारे लिए सूटेबल प्लेस है या कन्वीनियंट प्लेस है, वहाँ पे ये एडीआर मैकेनिज्म अप्लाई हो सकता है। तो इट बिकम्स वेरी ईजी, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट, आपका लीगल कॉस्ट, ये सब बहुत बच जाता है। ऑफ कोर्स डजंट मीन दैट लॉयर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन सम ऑफ दीज प्रोसेसेस विच वील डिस्कस इवेंचुअली। देयर आर ऑब्वियसली लॉयर्स इन्वॉल्व, बट
of course, the kind of cost that can come with a legal dispute where you go to the courts, where there are appeals, revision, so on and so forth, that completely gets eliminated. Another important thing that comes with ADR is that you do not need to go into the technicalities of the courts or legal system. अब हम सब जानते हैं या हम सब ने ये सुना है कि अच्छा कोर्ट में जब मैटर जाता है तो वो सालों साल चलता है, सब स्टक हो जाते हैं. ये सब आपको नहीं देखना पड़ता. इनफैक्ट आपको ये भी नहीं सोचना पड़ता कि किस तरह से विटनेस एग्जामिनेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या डिफरेंट प्रोसेस होंगे, फाइलिंग ऑफ डिस्प्यूट करना होगा. यानी ये सब जो भी टेक्निकलिटीज़ जो हम समझते हैं, पढ़ते हैं, वो सब कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता है. ऑल दैट यू आर रिक्वायर्ड टू डू और योर लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू डू आर जस्ट बी प्रेजेंट and present your side of the case. That's all that's required. Also, what happens is, since there isn't a lot of legal judicial intervention, जैसे कि strict कोर्ट मैकेनिज्म्स आपको फॉलो नहीं करने पड़ते, मैनर्स फॉलो नहीं करने पड़ते, बहुत ही इनफॉर्मल सेटअप हो जाता है, बहुत ही फ्री स्पेस मिलता है फॉर द पार्टीज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, जो कि ऑब्वियसली आपको एक कोर्ट में या एक जज के सामने नहीं मिलता है, विच इज़ वाई इट एक्ट्स एज अ ह्यूज बेनिफिट for the parties who go for these ADR mechanisms. And obviously इन सब से क्या होता है, आपके रिलेशनशिप बच जाते हैं, आपके कम्युनिकेशन बेटर होता है, आपका फ्यूचर बेटर होता है. इफ़ यू आर फॉर एग्जाम्पल इन अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन और आपके बीच में एक डिस्प्यूट हुआ है ड्यू टू some delay or some form of non-performance by either of the parties, then in that case what you can do is, after you've resolved your dispute through ADR methods, you can actually continue to sustain that commercial relationship. You can continue to have that contractual relationship that you've had, so that your business or the other party's business does not run into losses. So this is another way in which ADR mechanisms become really important in today's world. Obviously हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है कि हम कोर्ट्स के चक्कर खा सकें या जा सकें या प्रोसेसेस, डिफरेंट डेट्स, अपीयरेंसेस में इन्वॉल्व हो सके. सो उस सब चीज़ों के दिमाग में रखते हुए दिस एक्ट्स एज अ ह्यूज impetus for the parties to go for resolving disputes through ADR. ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है स्पेशली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ADR सिस्टम इन इंडिया, विच इज़ द फैक्ट कि हमारे कोर्ट्स पे बहुत बर्डन कम हो गया है. जैसे कि मैंने आपको बताया, वी कैन गो फॉर सिविल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फैमिली, प्रॉपर्टी लॉ डिस्प्यूट्स फॉर ADR. तो ह्यूज चंक ऑफ केसेस जो कि हमारे कोर्ट्स में जाते थे, दे वर पेंडिंग for litigation for a very long time, has now been eliminated. आप तुरंत ADR में जा सकते हैं. The ADR mechanisms clearly established that the said processes have to be finished in a short span of time, in very short span of time. In fact, ये actually एक mandate है in the different ADR legislations that exist in India. So which makes it really easy and obviously reduces the burden of the courts. Also, like I said, because ये parties को अपने आप opinions express करने का, their wishes express करने का opportunity मिलता है, so the bargaining method tends to be more creative, more satisfactory in the nature that they can reach to an amicable solution, and ensures that under all costs both the parties' best interests are preserved, taking care of the future needs as well. अब हम बात करेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ ADR. सो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला मोड विच वील डिस्कस इज आर्बिट्रेशन. नाउ आर्बिट्रेशन ऑफ कोर्स इज एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट विच इज गवर्न बाय द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट ऑफ 1996. ये एक्ट 1996 में ऑब्वियसली पास हुआ था, बट इसके अराउंड बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको बताते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस. Now, but before we move on to what this act talks about, let's understand what arbitration is. Arbitration is nothing but where a dispute is provided or is presented before an arbitral tribunal. तो ये arbitral tribunal is nothing but a 1, 3 और 5 judge member जैसा एक panel जिसमें necessarily हमारे legal experts हो सकते हैं या subject matter experts हो सकते हैं. So for example, if there is a contract between two parties where there is some form of
construction involved of a building or of a bridge. So an engineer can also be a part of this arbitral tribunal, and you don't really need a judge. The arbitrator does not necessarily require to have a legal qualification, which is a very refreshing change because आपको expert opinion तभी के तब मिल जाता है, and obviously the whole hassle gets eliminated in involving legal people. So that's another important thing. And like I said, since there is a panel, or since there are these members which are generally in odd numbers 1, 3, 5, 7, तो ये जो arbitrators हैं, ये जो decision देते हैं उसको हम award बोलते हैं. That's not called as a judgment or a decree, but rather an award that obviously needs to be enforced by a civil court at a later stage when the arbitration process is completely over. But the idea is that you go to a neutral third party where you explain to them what the dispute is about. Here obviously you will have to involve lawyers. आपके lawyers ही आपको represent करेंगे, but as parties to the case you can actually remain present and express whatever your concerns may be. ऑल्सो लाइक आई सेड, ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है जिसमें 1, 3 या 6 या 5 आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं, एंड जो डिसीजन होता है आर्बिट्रेटर का या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का वो फाइनल होता है. उसको अपील में बहुत कम चांसेस में कंसिडर किया जाता है, बट मोर और लेस दिस अवार्ड दैट इज गिवन बाय द आर्बिट्रेटर or the arbitral tribunal is considered to be final. And like I said, the idea is that the out of court settlement should happen without unnecessary delay, without any extra cost. Also, since there is a particular act like the Arbitration and Conciliation Act of 1996, this act goes ahead and lays down a step-by-step process as to how an arbitration is to be conducted. ये act आप clearly इंटरनेट पे जाके गूगल कर सकते हैं और आप सब इसका प्रोसेस समझ सकते हैं. बहुत ही ईजिली इस एक्ट ने हमको समझाया है कि कौन से डिस्प्यूट जा सकते हैं, आर्बिट्रेटर्स कौन हो सकते हैं, कितने टाइम में ये डिसीजन ख़त्म करना होता है, अवार्ड किस तरह लिखा जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इट्स वेरी ईजी एंड वेरी डायरेक्ट, मेकिंग इट वेरी हेल्पफुल फॉर पार्टीज who want to get rid of a dispute that has occurred between them in a very inexpensive and quick manner. The second important mode of alternative dispute resolution is mediation. Mediation is very similar to arbitration, but here you don't really need a lawyer to represent you. There may be lawyers who may be involved merely for some form of legal expertise or for some form of support, but as a party, as somebody who is suffering or who has undergone a dispute, they can directly move to the mediator and they can resolve the dispute. So here also the neutral third party is known as a mediator. यहाँ generally एक ही mediator होते हैं जो कि दोनों parties के dispute को सुनते हैं. So for example, if there's a husband and wife जो कि some form of trouble से गुजर रहे हैं and they want to go for divorce, so if the court suggests a mediation for them, again not necessarily that mediator is a legal expert, that can be anybody, and you can go ahead and the husband and wife in the example that I was talking about, आप अपने जो भी कंसर्न्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, सब एक्सप्रेस कर सकते हैं. आपको मौका मिलता है अपने फीलिंग्स को बताने का, एंड हियर ऑल्सो यू कैन रीच टू एन एमिकेबल सोल्यूशन. व्हेन वी से एमिकेबल सोल्यूशन, दिस हैज़ टू ऑब्वियसली टेक इन टू कंसिडरेशन द लीगैलिटीज दैट मे बी इन्वॉल्व. तो कोई रैंडम सोल्यूशंस हम ऑब्वियसली नहीं दे सकते, बट यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन द नीड्स ऑफ द पार्टीज. तो ये मीडिएशन का जो पूरा प्रोसेस है ये कम्प्लीटली वॉलंटरी है, कम्प्लीटली पार्टी कंट्रोल, पार्टी ड्रिवन है. तो आप जैसा चाहेंगे, द मीडिएटर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन द सेम मैनर. द ओनली आइडिया इज दैट द नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. इसके अलग अलग वेज होते हैं, लेकिन इंडिया में देयर इज नो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन दैट डील्स विद इट. वी merely have the mediation training manual which has been given by the Supreme Court of India, which deals with the process of how a mediation has to be undertaken. The third mode of alternative dispute resolution is conciliation. This, like the process of arbitration, is governed by the Arbitration and Conciliation Act of 1996. ये भी एक बहुत ही simple process है जहाँ parties come together and they try and resolve their disputes by
with the help or by the help of a third party who is known as the conciliator. Now ये processes generally हमने देखा है इंडिया में labor related disputes के लिए बहुत काम आता है या बहुत use होता है, जहाँ की maybe a company and its labor union want to have some form of discussion or want to resolve some form of differences that have occurred between them, which could be relating to the pay with respect to timings or any other HR related concerns of the policies that have been undertaken. So this is something which is very similar to arbitration, but a very informal way of arbitration. Here also you may not necessarily have a lawyer, but like I said, you may need a lawyer for some form of legal expertise. तो अगर जैसे labor related dispute है तो labor laws हमारे क्या बोलते हैं with respect to wages, with respect to timings या with respect to HR policies, उसके लिए आपको some form of legal help चाहिए हो सकता है, which is what you can use when a conciliation proceeding is taking place. Here also it's a very free flowing process, and the good thing about this is that it is non-binding in nature. तो अगर आप conciliation के लिए गए हैं and आप satisfied नहीं होते हैं with the decision that the conciliator gives or the amicable solution that you reach at, you are free to not abide by the same and move to other forms of dispute resolution, which may or may not include the court settlement. So this is why it's very informal, which is why it's very helpful. And if suppose they are agreeable, the parties are agreeable to the decision of the conciliator, you can actually bind it by way of a contract. The last form of ADR is Lok Adalat. Now, Lok Adalat, as the name suggests, is the People's Court. Now, Lok Adalat is a fairly new concept that we've seen. ये काफ़ी prominent है लेकिन in our rural areas जहाँ पे dispute resolution बहुत easily हो सकता है. So, क्या होता है एक लोक अदालत में? It is nothing but a court where the parties who are involved in any form of dispute, they come to this Lok Adalat to seek some form of resolution. Here also, as the parties to the dispute, you tend to go ahead and express what your struggles are, what your concerns are. Generally, we see this being used in property related disputes. So, agar suppose there are two people from one family who are involved in a property dispute, तो आप actually लोक अदालत में जा सकते हैं. आप suppose there are two brothers, so both of you can go ahead and express what you want out of this process. How do you want this dispute to be resolved? And generally, in a lok adalat, there is a legal alumni or legal person who is involved. So ये कोई ना कोई retired judge होते हैं या कोई senior lawyer होते हैं जो आपका dispute resolve करते हैं. So here it's a very similar process to that of a court, but the formalities of the court, the technicalities of the court completely get eliminated. You may not even need a lawyer as a party who is suffering or who has some form of issue with the dispute that is there. You can directly approach them and the same will be resolved very quickly with very minimal expense that is there. In fact, जो decision ये लोक अदालत देता है, it is very similar or it is actually in the nature of a decision by any civil court. तो आपका जो भी trial court है, sessions court है, जो decision देता है वैसे ही ये लोक अदालत का decision होता है, which is binding on the parties and you cannot actually go ahead and appeal in any court of law. तो अगर आप satisfied नहीं हैं तो आप आगे जाके अपील भी नहीं कर सकते हैं. The idea is कि ये process में आप अपना जो भी ओपिनियंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने हार्डशिप्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आप ख़त्म करिए वहीं पे, सो दैट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स कैन बी अवॉइडेड एंड यू डोंट हैव टू अगेन एंड अगेन गो टू द कोर्ट और बी इन्वॉल्व इन द whole legal judicial intervention issues that may be there. This is governed by the National Legal Services Authority Act of 1987. Like I said, this is fairly a newer concept. Even though this legislation exists for a long time, it has very recently, in the last 10-15 years, we've seen gained a lot more popularity. But it is
completely consensual. It is completely driven by the parties, as we have seen with other modes of dispute resolution. So I hope you've understood all the modes of alternative dispute resolution. Of course, I'm not saying that there are no challenges that are involved in it. Sometimes even with processes like arbitration and mediation, there might be long commitments or long appearances that may be involved. Sometimes some arbitrations even tend to be more expensive in nature. तो ये सारे challenges हैं. कभी कभी arbitrators या mediators available नहीं होते, तो उसको regulate करना थोड़ा difficult होता है. But overall, we can all see from whatever the modes we have understood that it is a very, very helpful concept. You can actually choose to resolve the dispute in the manner that you want without having to enter into the whole legal dispute battle in the कोर्ट, जो हम बार बार सुनते आते हैं कि कोर्ट में एक बार मैटर जाता है तो वो अटक जाता है एंड इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन. वीव हर्ड द फेमस तारीख पे तारीख dialogue. So all of that completely gets eliminated with this, because you as the party to the dispute have complete control over it. So I hope कि आपको इस टॉपिक के बारे में सब कुछ समझ आया. I hope कि आप इसके बारे में और पढ़ेंगे, अपने फ्रेंड्स फैमिली को सजेस्ट करेंगे that they can use these forms of dispute resolution. This is also very important from your CLAT perspective, because CLAT under the exam we've seen such kind of questions on the alternative dispute form of resolution, specifically on arbitration being asked. So please keep reading more and keep looking forward to these videos that we come up with on every Wednesday. Hope to see you soon. All the very best. Bye bye.